Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन जहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड हाउ टू हैंडल द मैट्रिसेस फॉर देयर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. So let's see the problem statement. Write a C program to accept two matrices of 3 by 3. 3 rows and 3 columns के दो matrices यूजर से accept करने हैं. That is what the first task is. Perform matrix addition, second task, and third task is perform the subtraction and display the addition and subtraction matrix as a result. So बहुत ही interesting code होने जा रहा है because here we could get to know the wisdom level about how to go on accepting matrices, perform addition and subtraction. And once you are able to do this code, believe me that आप matrices के बाकी के सारे operations के लिए ready हो जाओगे. So let's move into the VS Code to see how we can go on implementing this code. So we are back into the VS Code, and what we are going to do over here is in our C assignments, I'm going to create a new file and I'll be giving the name as matrix add and subtract.c. Right. And as usual, what I'm going to do is ये basic proforma यहाँ पे इस कोड में कॉपी कर लेते हैं. That's it, right? Okay. And अभी बहुत ध्यान से देखना है as well as वीडियो को पॉज करके जो स्टेप्स मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं उतना स्टेप आपके मशीन के ऊपर साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे साथ ही आपका ये कोड कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल क्रिस्टल क्लियर आइडियाज अबाउट हाउ टू एक्सेप्ट द मैट्रिक्स, ऐड देम एंड subtract them as well as how to display the result on the screen, right? So step by step implementation के लिए बढ़ेंगे. So सबसे पहले हम लोगों को 3 by 3 मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. So I'll go with integer mat1 3 by 3, right? mat2 will be of 3 by 3 and mat3 जिसमें एडिशन रखेंगे वो भी 3 by 3 का ही होगा, as well as mat4 जो करेंगे जिसमें सब्ट्रैक्शन रखेंगे वो भी 3 by 3 का ही होगा, right? Okay. Now let me give you the wisdom levels about how we can go on reading these definitions. mat1 is a variable of type integer का 2D array which consists of 3 1D arrays and each 1D array has got 3 elements of type integer, right? So arrays of arrays and पहला dimension हम लोग हमेशा करते हैं. The first dimension I'll be indicating this in terms of matrix as a row and second dimension will be going with what? Columns. So let's see like how we can go on accepting matrix 1. अगर matrix 1 को accept कर लिए and उसको display कर लिए तो अपना job will be very simple because in the same way I need to go on accepting what? Matrix 2 also. And फिर सोचेंगे addition करके result mat 3 में कैसे रखना है and subtraction करके mat 4 में कैसे रखना है. So सबसे पहला focus is how to go on accepting matrix 1, right? So let's see how we can go ahead. So यहाँ पे दो variables चाहिए, integer r as well as I'll go with c. R stands for rows and c stands for column, right? Okay, and here I'll go with the first prompt for the user, enter matrix 1, right? Okay, and to accept that we know that one for loop we need for handling the rows and another for loop we need for handling the columns. एक रो के सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट करेंगे. सो यहाँ पे फंडामेंटल वर्क होने वाला है नेस्टेड लूप्स का. For each iteration of outer loop, inner loop executes all its iteration. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iteration. So ध्यान से देखना है कैसे करेंगे. For each row, so मैं outer for loop रखने वाला हूँ रो के ऊपर. So r is equal to 0. R is equal to 0. R must be less than 3 क्योंकि 3 rows है अपने पास. So इसका indexing होना चाहिए 0, 1 and 2 तक, right? So less than 3 and then r plus plus. This loop is going to work for row and for each row I'll be going with column c is equal to 0, c must be less than 3 and c plus plus, right? Okay, and इसके अंदर फिर user को prompt करेंगे enter element
and accept करेंगे with the help of scanf, accept it in digit format and store it at address of mat1 of R and C, right? Accept it in digit format and store it in mat1 of row and column. ये जब दोनों फॉर लूप चलेंगे, नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है, आर का वैल्यू 0 के लिए सी का वैल्यू 0, 1 एंड 2 काम करेगा, राइट? उसको अगर ध्यान से देखना है एंड वी वांट टू शो इट इन आउटपुट आल्सो, एंटर एलिमेंट फॉर, एंड यहां पे ऐसे करते हैं %d and %d and this will be my row value as well as column value. तो ये बहुत अभी क्रिस्टल क्लियर दिखने वाला है कि कैसे हम लोग ये फर्स्ट मैट्रिक्स के वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट? ओके, सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन गो ऑन एक्सेप्टिंग दिस. So it goes on showing enter matrix 1 and अभी देखो row 0 column 0 position. If I go with the value as 1, then row 0 column 1 2, next is 3 4 5 6 7 8 and 9, right? Okay, अगर ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो रो 0 के तीनों कॉलम हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए. देन रो 1 के ऑल 3 कॉलम्स वी एक्सेप्टेड, रो 2 के ऑल 3 कॉलम्स वी एक्सेप्टेड. So this is a very simple way to go on accepting the matrix from the user. And बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने prompt दिया है यूजर को, so that user is aware of what value he is going to enter into. मतलब at what index, रो कौन सा चाहिए, कॉलम कौन सा चाहिए, ये भी यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट किया है, राइट? ओके, नाउ द सेम वे वी कैन गो ऑन एक्सेप्टिंग व्हाट, मैट्रिक्स 2. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस एक्सेप्टेंस ऑफ मैट्रिक्स 2. एंड यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं. ओके, डू यू एग्री दैट टू एक्सेप्ट द मैट्रिक्स 2 ओनली व्हाट वी नीड टू डू इज 2 चेंजेस विद इन दिस कोड. यहाँ पे मैट्रिक्स 1 की जगह पे प्रॉम्प्ट में मैट्रिक्स 2 करेंगे एंड यहाँ पे मैट 1 की जगह पे सिर्फ मैट 2 करेंगे. दैट्स इज द ओनली चेंज, राइट? सो इफ दिस लूप इज वर्किंग, डेफिनेटली मैट्रिक्स 2 का एक्सेप्टेंस का लूप भी वर्क होना चाहिए. सो व्हाट आई एम डूइंग इज I'm using Control C and Control V, pasting this over here and making the necessary changes. Please observe matrix 2 and यहाँ पे जाके enter element for so and accept it in digit format and store it in what, mat2 of R and C. तो ये matrix 2 का acceptance हुआ, right? Now what we will do is यहाँ पे ये हुआ अपना matrix 2 का acceptance and इसके बाद we need to go on what, adding the two matrices, right? So matrix addition, how we can go with this? Let me take one example. यहाँ पे अपने पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, दूसरा एक 3x3 का मैट्रिक्स है, राइट? एंड इन दोनों को ऐड करके we need to go on displaying the result or put the result into the third matrix, right? For example, यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9. So this is row 0 1 and 2, column 0 1 and 2. Similarly प्लस करके यहाँ पे I'll go with 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा एक मैट्रिक्स रखा. यहाँ पे इसके भी रो 3 rows and 3 columns, right? Do we know like how we can go on adding the matrices? Yes, row 0 column 0 of matrix 1 will be added into row 0 column 0 of matrix 2 and that will become row 0 and column 0 of matrix 3, right? So mat 1 plus mat 2, so ये आएगा 1 plus 9, that is what, 10. फिर row 0 column 1 will be added to row 0 column 1 of matrix 2, 2 plus 8 and ये बनेगा row 0 column 2, sorry, column 1 of what, matrix 3, addition वाला matrix, right? Row 0 column 2 will be added with row 0 column 2, 3 plus 7 10 and this becomes row 0 column 2 of addition matrix. तो ऐसे बनते जा रहे हैं, right? Do you agree that same kind of loop we need, because एक रो के सारे कॉलम हमको हैंडल करने हैं एंड फिर मैट्रिक्स 1 का वो एलिमेंट ऐड करेंगे मैट्रिक्स 2 के उसी एलिमेंट के साथ एंड वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन व्हाट, मैट्रिक्स 3, राइट? एक बार हम लोगों ने एडिशन कर लिया तो then subtraction will be just a copy and paste. Why? Because just plus sign will be replaced by what, minus sign.
and instead of putting the result of subtraction in mat3, we are going to put it in what? mat4, right? So let's see how we can go on doing this. So very simple operation and interesting operations. So let's go ahead. So here I'll go with, so now यहाँ पे addition के लिए I'm just putting it in comment, addition के लिए for r is equal to 0, r must be less than 3, r plus plus, and यहाँ पे I'll go with for column is equal to 0, column must be less than 3 and column plus plus, right? Okay, and यहाँ पे रखेंगे mat3 का रो एंड कॉलम कैसे फॉर्म करना है, इज इक्वल टू mat1 का रो एंड कॉलम को ऐड करना है mat2 के रो एंड कॉलम के साथ. mat1 का रो कॉलम विल बी एडेड विथ mat2 का रो कॉलम एंड द रिजल्ट विल बी केप्ट इन mat3 का रो एंड कॉलम, एंड ये चलेगा हर रो के हर कॉलम के लिए, राइट? सो दिस पर्टिकुलर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर addition of two matrices and putting the result in the third one, right? Okay, now the same one we will go with subtraction also, and फिर साथ में चारों matrices को display कर देंगे, right? So I'm just copying this and pasting over here, and here I'll go with subtraction, and only the changes यहाँ पे matrix 4 में रखेंगे and यहाँ पे I'll go with what? minus symbol. That's it, right? Okay. अभी mat3 में अपना एडिशन आ चुका है, mat4 में अपना सब्ट्रैक्शन आ चुका है. नाउ मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, एडिशन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, ये चारों मैट्रिसेस को डिस्प्ले करना है. सो हाउ वी कैन गो विद दिस, लेट अस ऑब्जर्व. सो लेट मी गो विद मैट्रिक्स 1 इज, यहां पे मैट्रिक्स 1 को डिस्प्ले करते हैं. अगेन for each row, every column we need to go on displaying. So r is equal to 0, r must be less than 3 and r plus plus, right? Okay, and यहाँ पे इसके अंदर for column is equal to 0, column must be less than 3 and column plus plus, right? Okay, अभी जो element है उसको display करना है. So simply we'll go with printf and %d, right? Okay, space के साथ उसको display करते हैं थोड़ा, and comma करके mat1 of R and C. Now we know that inner for loop is responsible for printing a row, right? उस रो के सारे कॉलम्स को उसने प्रिंट कर दिया. जैसे इनर फॉर लूप से बाहर आते हैं, इसका मतलब एक रो के सारे कॉलम प्रिंट हुए, तो उसके बाद हम लोगों को चाहिए न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट? सो इनर लूप खत्म होने के बाद आई विल सिंपली गो विद printf \n, न्यू लाइन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दिस इज जस्ट प्रिंटिंग ऑफ मैट्रिक्स 1. तो पहले चेक करते हैं मैट्रिक्स 1 प्रिंट हो रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज I'll simply go with execution of the code over here, and here let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ये तो मेरा मैट्रिक्स 1 का एक्सेप्टेंस हुआ, राइट? ओके, एंड इट सेज नाउ एंटर मैट्रिक्स 2, राइट? ओके, एंड हियर आई कैन गो विथ, लेट अस से I'll go with 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, right? Okay, and it says that matrix 1 is 1 2 3. हाँ, तो ये इसी लाइन पे 1 2 3 उसने प्रिंट कर दिया. If I want to take it on the new line, I need what? \n, and तब जाके matrix 1 नए लाइन पे प्रिंट होगा, right? But what we'll do is ये एक्सेप्टेंस तो कर लेंगे, पर ये मैट्रिक्स 1 2 3 and 4 नए स्क्रीन पे दिखाएंगे, राइट? सो इन दैट केस आई नीड व्हाट? क्लियर स्क्रीन फॉर दैट, राइट? सो व्हाट विल डू इज ऑब्जर्व व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहां पे इसके बाद भी मुझे चाहिए मैट्रिक्स दिखाना है न्यू लाइन के ऊपर, राइट? ओके, एंड एज वेल एज व्हाट आई विल सिंपली कॉपी इज ये system.cls मैं कॉपी कर लूंगा, दैट्स इट. सो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 डिस्प्ले करने से पहले आई विल गो ऑन कॉपिंग दिस, राइट? ओके, उसके बाद what we'll do is simply मैट्रिक्स 1 जैसे डिस्प्ले किया है वैसे ही मैट्रिक्स 2 का डिस्प्ले, what will be the change? मैट्रिक्स 2 is, and यहाँ पे mat2, right? Okay, similarly I'll go with one more copy and paste, and यहाँ पे मैट्रिक्स
1 के जगह पे I'll go with addition matrix is, right? Okay. And addition matrix, we are putting it into the matrix 3. So mat 3 वहां पे display करेंगे and one more copy and paste and यहाँ पे चलेगा subtraction matrices, right? Okay. So subtraction matrices, right? Okay. And let's go on checking how this behaves. So here I go with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, right? Matrix 2 का भी acceptance चल रहा है. I'll go with 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अभी जैसे मैं एंटर करूंगा स्क्रीन क्लियर होके यहाँ पे मैट्रिसेस दिखने चाहिए, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व. हाँ, मैट्रिक्स 1 इज सो एंड सो, मैट्रिक्स 2 इज सो एंड ये हुआ एडिशन मैट्रिक्स. Each element is 10. Now let's see like how this subtraction matrix is going to be shown, right? Okay, यहाँ पे कुछ गलती दिखा रहा है because कॉपी पेस्ट के चक्कर में हम लोगों ने एक चेंज करना भूल गए. हाँ, अभी ये मैट्रिक्स 1 को ही यहाँ पे दिखा है बिकॉज ये कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे तो चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, बट सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कहाँ पे है? मैट 1 में नहीं है, मैट 4 में है, तो उसको चेक करते हैं, राइट? ओके, एंड आई विल गो ऑन making this as what? Mat 4. That's it, right? Okay, now my code is ready for execution and let's run it again. And यहाँ पे I'll go on executing this one more time. चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये हुआ पहला मैट्रिक्स का वैल्यू. Then I'll go with 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Right? Okay. And ये matrices बने अपने result. Right? So matrix addition matrix, and now it becomes a very perfect subtraction matrix. Right? 1 minus 9 minus 8, 2 minus 8 minus 6, 3 minus 7 minus 4, like that it goes with. Right? Okay. I hope कि ये सिंपल प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. हाँ, इसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट्स 2-3 ही चीजें हैं. हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग मैट्रिक्स 1 अगर पता चला, उसी को कॉपी करके हम लोगों ने मैट्रिक्स 2 बनाया एंड देन एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, एंड देन हाउ टू डिस्प्ले मैट्रिक्स 1 अगर पता चला, तो मैट्रिक्स 1, 2 एडिशन मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स वी हैव डिस्प्लेड जस्ट बाय द सेम वे, राइट? सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. अगर कुछ एरर आ रहा है तो take a snapshot, send it on my WhatsApp. I'll resolve that particular error very immediately, right? But keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.